Drugs used to treat erectile dysfunction. So, we are doing the chapter which is the drugs which are used for urologic disorders. And I told you in the overview video कि urologic disorders में there are two topics जो हमें cover करने हैं. One is the drugs for erectile dysfunction, and the other one is the drug group which is related to BPH, benign prostatic hyperplasia. So आज की वीडियो का टॉपिक है erectile dysfunction के लिए यूज होने वाली drugs, right? Now when we say erectile dysfunction, obviously it has to do with copulation. When we say copulation, that basically means intercourse, and sexual reproduction के लिए intercourse is an important phenomena. You all are aware of this. So the penile tissue that the males have got has to be erect in order to penetrate into the female reproductive system. And if there is problem with the erection mechanism, this is what we call erectile dysfunction, right? It can be because of so many reasons. हमने पिछली मेरी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो फॉरेंसिक में पूरा एक चैप्टर भी ये डिस्कस किया है कि इम्पोर्टेंस के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल देयर आर मेंटल कॉजेज फॉर इम्पोर्टेंस, साइकोलॉजिकल इश्यूज, देयर कैन बी फिजिकल इश्यूज कि कोई कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी है या कोई ट्रॉमा है. सो देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट कॉजेज ऑफ erectile dysfunction. But some of the erectile dysfunction can be overcome by using the drugs, not all of them, okay? So, जो drugs हम use करते हैं commonly वो आज हम discuss करेंगे. So, therapy used for erectile dysfunction include penile implants. So, this is something which is kind of a permanent solution, जिसमें आप implants use करते हैं to make the penis rigid. There can be intrapenile injections of some of the drugs. पीनस के अंदर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं सच एज फॉर alprostadil या इंट्रायूरेथ्रल. ऑब्वियसली देयर इज यूरेथ्रा गोइंग इन द मिडल ऑफ द पिनाइल शाफ्ट, तो इंट्रायूरेथ्रल सपोजिटरीज भी देते हैं alprostadil की. But then there is the most commonly used category, which is oral drugs, and particularly the drugs which are phosphodiesterase 5 inhibitors. ये वो ग्रुप है जो most commonly, most efficiently use होता है, और इस पर हमारा सारा फोकस आज की वीडियो में होगा. Because of the efficacy, each of use and safety, ये सारी बातें अगर आप इसको कैलकुलेट करें, then oral drugs phosphodiesterase 5 inhibitor, they are the most commonly and they are the first line for erectile dysfunction. And this is the group which also includes the famous drug called Viagra. Okay, we'll talk about this, how these phosphodiesterase 5 inhibitors work and what is their mechanism of action. So let's start our discussion phosphodiesterase 5 inhibitors पे. अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूडेड हैं. सो देयर आर 4, अब से एक दो ज़्यादा भी आ गए हैं, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर sildenafil, vardenafil, tadalafil and evanafil. Okay, they are approved, FDA approved for the treatment of erectile dysfunction. Now, all 4 phosphodiesterase inhibitors जिनके अभी हमने नाम लिए, they are equally effective for the treatment of erectile dysfunction. और इनका जो adverse effect profiles हैं, they are almost similar to one another. However, these agents differ in duration of action. That's the most important thing. अक्सर लोग कहते हैं कि 4 तरह के drugs हैं ना, sildenafil, vardenafil, tadalafil, evanafil. इनमें से कौन सी अच्छी है? So, as far as the potency is concerned, इनका तकरीबन एक ही जैसा effect है, and side effects भी एक जैसे हैं. However, they differ in their duration of action and effectiveness time period. So एक चार्ट है, अभी से दिखा देता हूँ. So ये 4 देखें, sildenafil है, vardenafil है, tadalafil and evanafil. Okay, so time to peak concentration and half life. So सबसे ज़्यादा half life का मतलब ये कितनी देर तक अब ये ड्रग आपके ब्लड में रहेगी, to the half of the concentration which you all originally have taken. And time to peak concentration यानी इनका maximum concentration, peak concentration कितनी देर में अचीव होगी. इसका दूसरा मतलब आसान ज़बान में ये है कि इस बंदे ने अगर फॉर एग्जांपल sildenafil खा ली तो तकरीबन 1 घंटे बाद इसकी बॉडी में sildenafil की कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होगी, बिकॉज ये ज़ाहिर जीआई ट्रैक में जाएगी ड्रग, वहाँ से एब्जॉर्ब होगी, लिवर फर्स्ट पास एंड देन इनटू द सर्कुलेशन, तो तकरीबन 1 घंटा लगेगा. यानी सेक्सुअल एक्टिविटी से ऑलमोस्ट अगर आप 1 घंटा 50 मिनट पहले ये ड्रग लेंगे, देन यू प्रॉबेबली बी टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट, राइट? या इवन हाफ एन आवर पहले, बिकॉज कर्व आपको फिर यहाँ मिलेगा. आधे घंटे पहले अगर आपने ड्रग ली है तो कॉन्सेंट्रेशन पीक हो रही होगी, एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी इट विल गो टू द पीक हाईएस्ट मोस्ट, राइट? सो दिस इज द टाइमिंग के कितनी देर पहले सेक्सुअल एक्टिविटी से आपको वो ड्रग एक्चुअली लेनी चाहिए
ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। इसी तरह अगर एवेनेफिल की बात करें तो 30 to 45 मिनट इट टेक्स टू रीच द पीक कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये आपको सेक्सुअल एक्टिविटी से आई वुड सजेस्ट 15-20 मिनट पहले ले लें। वर्डेनाफिल इज सेम एज सिल्डेनाफिल 60 मिनट्स एंड टैडलाफिल इज 120 मिनट। इट टेक्स 2 hours, इसको 2 घंटे लगते हैं टू रीच टू द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, राइट। एंड दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस कि एक ड्रग जब आप लेंगे तो वो कितनी देर में अपनी पीक कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंचेगी। मैं आपको बता चुका हूँ सिंपल वर्ड्स में, ये है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से कितनी देर पहले वो ड्रग लेनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी से 2 मिनट पहले ये ड्रग ले ली है तो इस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट एट ऑल, क्योंकि इसको अपनी पीक कॉन्सेंट्रेशन पहुंचने में ही 45 मिनट लगने हैं, राइट। तो अप्रोप्रिएट टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का मतलब ये है कि कितनी देर तक ये ड्रग इफेक्टिव रहेगी आपकी बॉडी में। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी, टैडलाफिल इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट टेक्स 2 hours टू रीच टू द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, बट देन इट ऑल्सो लास्ट इन द बॉडी। इसका हाफ लाइफ है 18 hours, यानी इफ समबडी इज टेकिंग दिस पर्टिकुलर ड्रग टैडलाफिल, उसमें ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी देर तक रहेगी एंड द पर्सन विल बी, उसका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है दैट विल बी अंडर ट्रीटमेंट, या दूसरे अल्फाज में कहें कि उसकी सेक्सुअल पोटेंसी विल बी वेरी गुड फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, इतनी ज़्यादा देर तक। बाकियों के अगर आप देखें तो इट्स आइदर 5 hours और लेस देन 5 hours, बट लुक एट टैडलाफिल, यू बिकम अ सुपरमैन यूजिंग टैडलाफिल। इट टेक्स लॉन्ग टाइम बट देन इट लास्ट long as well, okay. And then there are certain food interactions. For some of the drugs there are no food interaction, and for some of them there is food interaction, and that food interaction is basically fat content of your diet. So if you are taking the drug, for example sildenafil, with high fatty diet, then it will actually take longer to reach to the highest concentration. So do not take sildenafil with high fatty diet, और ताकि वरना फिर ये जो 1 घंटा यहाँ बताया था ना कि इसकी पीक कॉन्सेंट्रेशन तक पहुँचने में टाइम लगेगा, ये टाइम डबल भी हो सकता है अगर आपने हाई फैट कंटेंट के साथ लिया है। बट आई मीन लुक एट टैडलाफिल, that looks a very good drug. No food interaction, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको लें, कुछ भी खा रहे हो साथ में, 2 घंटे ज़रूर लेगी peak concentration तक पहुंचने में, but then it lasts very very long. Okay, so that is how these drugs differ from each other. Otherwise they are almost the same. सबका काम एक ही है, सबका mechanism of action एक ही है, और वो देखते हैं क्या है। एक बात और बता दूं साथ में कि चलो वो भी आगे लाइन आएगी तो बताता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्सुअल स्टिमुलेशन रिजल्ट इन स्मूथ मसल रिलैक्सेशन ऑफ कॉर्पस कवर्नोसम। यू नो द पिनाइल स्ट्रक्चर हैज कॉर्पस कवर्नोसम, एंड सेक्सुअल स्टिमुलेशन जब होती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट, व्हाट हैपेंस कि जो स्मूथ मसल्स हैं दे बिकम रिलैक्स। जब वो रिलैक्स होते हैं तो कॉर्पस कवर्नोसम में ब्लड फ्लो बढ़ता है, सो देयर इज इंक्रीज ब्लड फ्लो देयर, और दिस इज ऑल मीडिएटेड बाय रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। सो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली एक्टिवेट guanylyl cyclase which forms cyclic GMP from GTP, which is guanidine triphosphate. अब ये जो cyclic GMP बनता है, it produces small muscle relaxation. So overall यहाँ जो cavities हैं, जो cavernous हैं, उनमें रिलैक्सेशन स्मूथ मसल की ज़रूरी है, एंड इट फॉलोज बेसिकली सेक्सुअल स्टिमुलेशन। सो सेक्सुअल स्टिमुलेशन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, साइक्लिक GMP बनता है, स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, और इस ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह ही से इरेक्शन का प्रोसेस होता है। सो दैट्स हाउ इट बेसिकली वर्क नॉर्मली, राइट। और इस सारे के पीछे है बेसिकली रिड्यूस कैल्शियम इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन, तो रिलैक्सेशन होती है। सो रिलैक्स होगा, मोर ब्लड विल कम इन एंड द पीनस विल बी इरेक्ट. Okay. Now, duration of action of cyclic nucleotide is controlled by phosphodiesterase एक enzyme है, and at least 11 isozymes have been identified. Now, कहने का पर्पस यहाँ पे ये है कि ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है इरेक्शन की, इस सारे को आखिर में आके ख़त्म कौन कर देता है? phosphodiesterase एंजाइम। और इसका काम है कि साइक्लिक जो यहाँ पे GMP बना है, इसके लेवल्स को फिर ये कंट्रोल करता है, ख़त्म करता है, एंड देन द होल प्रोसेस रिवर्ट्स बैक। रिलैक्सेशन ख़त्म हो जाती है, साइक्लिक GMP ख़त्म हो जाता है, इरेक्शन ख़त्म हो जाती है। नाउ अगर मैं किसी तरह इस पर्टिकुलर एंजाइम ही को ब्लॉक कर दूँ, तो जब ये एंजाइम ही नहीं होगा, साइक्लिक GMP ख़त्म नहीं होगा, और रिलैक्सेशन ख़त्म नहीं होगी, इरेक्शन ख़त्म नहीं होगी, एंड दिस इज़ व्हाट नाउ यू लुक एट द वर्ड हियर, फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर, फॉस्फोडाइस्टरेज के इनहिबिटर, इसको ब्लॉक करने वाले इनहिबिटर। सो ये सारी जो ड्रग्स हैं, सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, दे ऑल इनहिबिट द फॉस्फोडाइस्टरेज। तो सारा साइकिल रिवर्स हो जाता है, एंड देन
what happens कि सारा प्रोसेस एंड पर नहीं पहुंचता बिकॉज एंड पे पहुंचाने वाले फॉस्फोडाइस्ट्रेज को आपने ब्लॉक कर दिया है, राइट? सो सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल, टेडालफिल, एवेनाफिल, दे ऑल इनहिबिट फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5. ये 11 में से एक आइसोजाइम है. दिस आइसोजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेग्रेडेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी. सो अब साइक्लिक जीएमपी खत्म नहीं होगा. जब वो खत्म नहीं होगा तो आप समझ गए बात कि इरेक्शन ने लॉन्ग लास्टिंग होना है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि ये जो जितनी भी ड्रग्स हैं दे ओनली वर्क विद सेक्चुअल स्टिमुलेशन. क्योंकि देखें अब इस पूरी फिजियोलॉजी को समझे ना यार आप. फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो है ना वो जब इरेक्शन हो जाती है ना, पूरी इरेक्शन का साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो अब आता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज और इसको डिग्रेड करता है. सो दैट इज द जॉब ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेज. यानी फॉस्फोडाइस्ट्रेज उस पर काम करेगा जब पूरा नॉर्मल साइकिल ऑफ इरेक्शन हो गया है, जिसका फर्स्ट स्टेप क्या था? सेक्सुअल स्टिमुलेशन. नाउ दिस सेक्सुअल स्टिमुलेशन कैन बी मेंटल, सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग सेक्सुअली, और इट कैन बी फिजिकल इफ you are rubbing the penis, for example, or the partner is rubbing the penis. So that is what we call the sexual stimulation. Only if sexual stimulation is there, it is only then the phosphodiesterase inhibitors work. Yani if you are taking sildenafil, for example, sildenafil without any sexual stimulation will not work. You need sexual stimulation, you need your partner stimulation, or you need your imaginative stimulation. आप सोच रहे हो कोई ऐसी erotic चीज, then only sildenafil will work. So that's a very important point to remember, okay? So at the recommended doses particularly, phosphodiesterase inhibitor have no effect in the absence of sexual stimulation. Very important point. So if there is no sexual stimulation, there is no function of phosphodiesterase inhibitors. That is a very, very important point, right? ओके, अब इस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स, इन सब की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने समझ लिया. सिल्डेनाफिल एंड वर्डेनाफिल हैव सिमिलर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज. बोथ ड्रग्स शुड बी टेकन अप्रोप्रिएटली अप्रॉक्सिमेटली 1 hour प्रायर टू एंटिसिपेटेड सेक्सुअल एक्टिविटी, बिकॉज इनका टाइम है तकरीबन, आपको मैंने ये चार्ट दिखाया था ना, 1 घंटा. So where is the chart? There, 60 minutes. Sildenafil and Vardenafil. So I would say 1 घंटे से भी पहले लेनी चाहिए, 45 मिनट, 40 मिनट, even आधा घंटा. That's fine. With erectile enhancement observed for up to 4 hours after administration. So this is the time period during which your erectile function will be fantastic because of these drugs, okay? So if you have to perform sexual activity, say for example 10 hours later, this is not the drug to be taken now. It has to be taken 1 hour prior to anticipated sexual activity. Okay, Vardenafil is also available in an orally disintegrating tablet ODT formulation, जिसे हम कहते हैं, which is not affected by high fat meal. So ये diet consumption जो मैं बता रहा था. Vardenafil is also available in orally ODT formulation, may be decreased by water, and therefore ODT should be placed under the tongue and not be administered with liquid. ये important point है यार. सारा आपने planning की हुई है sexual activity की and you are taking the drug in the wrong way. This will all be screwed. The Vardenafil ODT provide a higher systemic bioavailability than Vardenafil. ये देखें, फिल्म कोटेड से ज़्यादा बेहतर ODT है. Tadalafil has a slower onset of action. It takes about 120 minutes to reach to the peak, but it lasts very, very long, 18 hours. As such, it is approved for once daily dosing, not more than that. This results in enhanced erectile function for up to 36 hours. So you are like super erotic for this particular time. This is like more than a day. Furthermore, the absorption of tadalafil is not clinically influenced by food, so it's another plus. The timing of sexual activity is less critical for tadalafil because of its prolonged duration of action. So tadalafil has a very long-term activity. Of all the phosphodiesterase 5 inhibitors, evenafil has the quickest onset of action. अगर फौरी तौर पे आपको sexual activity आपने plan की है, then this is the drug to go for. Immediate. All phosphodiesterase 5 inhibitors are metabolized by cytochrome P450 3A4 system, and this is very important, because you will have to do dose adjustments if you are taking some drugs which are affecting this system. So dosage adjustment for sildenafil, tadalafil, vardenafil are recommended in patients with mild to moderate hepatic dysfunction. If the liver is not working, obviously this system is not working and you have to adjust the doses. Okay. For patients with severe renal function, because they are then excreted via this route, the dose of sildenafil and tadalafil should be reduced, and daily dose of tadalafil as needed, evenafil, are contraindicated in these patients. So all important consideration: liver में metabolism, kidney excretion. Okay. Obviously, there are some adverse effects as well, and the adverse effects the most frequent are headache, because it affects the vascular system, flushing, dyspepsia, nasal congestion. Heart attack has been reported as well, MI.
with overdosing. These effects are generally mild, and men with erectile disability rarely discontinue treatment because of the side effect, because they can bear with this. Headache, flushing बर्दाश्त कर लेते हैं, but erectile dysfunction बर्दाश्त नहीं होता. You know what I mean? Disturbances in color vision has been reported, particularly blue-green discrimination. Tadalafil, however, does not appear to disrupt the phosphodiesterase 6 function, because some of the drugs, ये जो इसका 6 isozyme होता है ना, there are 11 isozymes. So isozyme 6 is affected by many of the drugs, and this leads to color disruption. But if you use tadalafil, looks like a super drug in this particular context. It takes longer to kick in, but then long lasting, is not affected by food. And now you see there is no color impairment as well, so you actually see things in the right color. That's also I'm just being cheeky, guys. Now, the incidence of these reactions appear to be dose dependent. Sudden hearing loss has also been reported, perhaps due to changes in sinus pressure of vasodilation, because they relax the smooth muscles. Tadalafil has been associated with back pain and myalgias. There is an inherent cardiac risk associated with sexual activity, because obviously your heart beats faster during the sexual activity. Therefore, phosphodiesterase 5 inhibitors should be used with caution in patient who has history of cardiovascular disorders. Okay, MI किसी को हुआ है तो ख्याल से यूज करें जरा. Phosphodiesterase 5 inhibitors should not be used more than once per day for the treatment. ये नहीं है कि सुबह शाम खा रहे हैं आप, तो जरा ख्याल करो भाई. Although this is rare side effect, it's a medical emergency because it can cause painful prolonged erection, which is also called priapism. यानी अगर आपने overdose ले लिया है तो अब ज़रूरत से ज़्यादा ही टेंशन बढ़ गई है penis में, and this is now painful priapism, and that's a medical emergency. Okay, it can be followed by necrosis and tissue death as well. Now, there are certain drug interactions as well. Because of the ability of the phosphodiesterase 5 inhibitor to potentiate the hypotensive activity of NO, देखें ना हो क्या रहा है, cyclic GMP नहीं खत्म हो रहा तो there will be more and more NO now in the body. Administration of these medication in combination with organic nitrates is contraindicated because already nitric oxide का concentration बहुत बड़ा हुआ है, so you don't basically take them with nitroglycerin or isor. So ये जो drugs आप angina के लिए use करते हैं उनके साथ आपने ये drugs use नहीं करनी. Phosphodiesterase inhibitors may produce additive blood pressure lowering effect when used in the patient who are already taking alpha adrenergic antagonists. So one group of drug is nitrogen containing drug, जिसमें आपने ख्याल करना है. Second group of drug is the alpha adrenergic antagonist if you are using them, and then the combination of phosphodiesterase 5 inhibitors and alpha adrenergic antagonists should be used with caution because it will lower the blood pressure furthermore. Patient syncope में जा सकता है. Patient should be on a stable dose of alpha adrenergic antagonist prior to initiation of these drugs, and phosphodiesterase inhibitors should be started at a lower dose अगर patient already ये antagonist ले रहे हैं. Okay, ठीक है, सारी important चीज़ें. Doses of phosphodiesterase 5 inhibitors may be needed to be reduced in the presence of CYP3A4, such as ये वो drugs हैं जो इस system को inhibit करती हैं, क्लेथ्रोमाइसिन, रेटोनावेर. तो जब आप ये यूज़ कर रहे हैं ज़ाहिर ये system inhibited होगा, so you know कि आप concentration of sildenafil ये सारे बढ़ जाएंगे because the system is not working, right? और affect होंगे, that's the better word to use. Because QT prolongation, the combination of vardenafil and dronidran should be avoided. आपको ये जो ड्रग इंटरेक्शन है ना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार. ये ना पेशेंट सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ड्रग्स तो ले रहा है बट साथ में और दूसरी ड्रग्स यूज़ कर रहा है तो कहानी कोई दूसरी हो जाए. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द पेशेंट इन अ होलिस्टिक व्यू, राइट? ओके, अब जब ये मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, सो आई टोल्ड यू कि देयर आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स. एक का हमने नाम लिया था अल्प्रोस्टैटिल, जो कि इंट्रापिनाइल भी है और इंट्रा यूरेथ्रल भी है. दूसरा हमने बात की थी फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स की. फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स बाय लार्ज सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं, तो हमने इनका जिक्र पहले किया, काफ़ी डिटेल में बात की. अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अल्प्रोस्टैटिल के बारे में भी, ठीक है? आइए देखते हैं कि ये ड्रग किस तरह काम करती है और इसका क्या रोल है. इट्स अ सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 बेसिकली. इन द पिनाइल टिश्यू प्रोस्टाग्लैंडिन E1 अलाउज फॉर रिलैक्सेशन ऑफ, फिलॉसफी यहाँ भी यही है, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन कॉर्पस कवर्नोजम. अल्प्रोस्टैटिल इज अवेलेबल एज एन इंट्रा यूरेथ्रल सपोजिटरी, यूरेथ्रा में डाल दें या इंजेक्ट कर दें पीनस के अंदर. Although phosphodiesterase inhibitors are considered first line therapy for the treatment of erectile dysfunction,
dysfunctional alprostadil may be used for patients who are not candidates for oral therapy. Now listen to this. There can be several conditions कि जब आप oral therapy नहीं दे सकते, या there can be several conditions जब आप patient को phosphodiesterase inhibitors नहीं दे सकते. अभी ये इतना सारा drug interaction मैंने आपको बताया ना, patient को heart attack हो रखा है, patient already angina की drugs ले रहा है, तो फिर आप नहीं दे पाएंगे. This is where you should now consider alprostadil, and it relaxes smooth muscle, by a mechanism which is not very clear, but we know that it is because of prostaglandin. It is believed that alprostadil increases the concentration of cyclic AMP within the cavernous tissue. As a result, the protein kinase is activated and allowing the trabecular smooth muscle relaxation and more blood coming into the cavernous. Pharmacokinetically, if you think about this, it is systemic absorption इसकी minimal है, क्योंकि आप इसको penis में या तो direct injection दे रहे हैं या urethra के अंदर suppository डाल रहे हैं. If any alprostadil systemically absorb होती है, it is quickly metabolized, so systemic effects नहीं है इसके. Now this is the beauty of this drug. Imagine about sildenafil. Sildenafil is going to interact with a lot of other things in the body, causing a lot of side effects, क्योंकि वो blood में घूम रहा है ना, इसका जनाब systemic absorption है ही नहीं. So that's the beauty. The onset of action is also very quick, 5 to 10 minutes, when given as a urethral suppository, and 2 to 25 minutes if given by injection, and the resulting erection is not bad, 30 to 60 minutes. But बाज़ लोगों को लगता है कि this is too less of a time, but anyways that's the time. Adverse effects systemically तो absorb होती नहीं है, तो systemic side effects are very rare. However, hypotension, headache can be possible because prostaglandin even induced vasodilation is one of the possibility. Locally, the adverse effects of alprostadil can be because of the injection or the suppository thing. Penile pain हो सकता है, hematoma बन सकता है. So these are local complications because of injections. Alprostadil administration may lead to priapism as well अगर overdose में डाल दिया, ज़रूरत से ज़्यादा erection, painful erection. Alright, so that was all. Next video में बात करेंगे benign prostatic hyperplasia की. Till then, अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.